seventh visit since 2015. He is set to meet with the Mohamed bin Rashid Al Maktoum, who serves as the Vice President, the Prime Minister and the Minister of Defence of the UAE. Later today, he will attend an Indian diaspora event called Nahyan Modi, where tens of thousands of Indian diaspora members are slated to attend. Tomorrow, he is slated to inaugurate Abu Dhabi's first Hindu temple. The two nations are expected to sign economic agreements that are important to both sides, as well as boost people-to-people ties. Now, remember, this is the Prime Minister's third visit to the UAE in the last 8 months. ये एक अद्भुत नजारा आपको देखने का मिलेगा जब हजारों की संख्या में पूरा स्टेडियम भरा होगा। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जब भी पब्लिक इवेंट आउटसाइड द कंट्री नरेंद्र जी मोदी के बारे में याद किया जाएगा तो अहलेन मोदी एक लैंडमार्क इवेंट साबित होगा। 3:30 बजे यहाँ पे पूरा कार्निवल सारे स्टेट्स के लोग आके करने वाले हैं और उसके बाद 5 बजे से 6 बजे तक आए अद्भुत यात्रा हर स्टेट की जो साबित करेगी अनेकता में एकता, भारत की विशेषता। और उसके बाद यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र जी मोदी वहां से इंडियन डायस्पोरा को एड्रेस करने वाले हैं। एलन मोदी कार्यक्रम के लिए अब हम इस स्टेडियम के अंदर मौजूद हैं और मेरे पीछे जो आप मंच देख रहे हैं ये वो मंच है जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारतीय समुदाय से जुड़े हुए करीब 60-65 हजार लोगों को संबोधित करने वाले हैं। और ये जो पूरा स्टेडियम है जो आप यहां पर देख रहे हैं, जायद स्पोर्ट्स सिटी स्टेडियम में हम इस वक्त मौजूद हैं और ये पूरा स्टेडियम कहा जा रहा है कि खचाखच भर जाने वाला है। आगे जो आप ये हिस्सा देख रहे हैं सफेद कुर्सियों वाला, ये वो जगह है जहां पर वीआईपीज के बैठने के लिए व्यवस्था की गई है इस जगह पर। और इसके ठीक सामने आप देखिए वो मंच लगा हुआ है जहां पर नरेंद्र मोदी जो है लोगों से बात करेंगे। एक सामने डायस लगा हुआ है जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलेंगे। एहलन मोदी कार्यक्रम, एहलन मोदी का मतलब वेलकम मोदी। नरेंद्र मोदी जी आपका स्वागत है। और इसके लिए यहाँ पर चूंकि आप देखिए इतना बड़ा ये स्टेडियम है, यहाँ पर ये कार्ड्स रखे हुए हैं। मतलब अगर आपको इस छोर से दूसरी छोर जाना है तो आपका 100 ग्राम वजन कम हो सकता है, चलते चलते जाइएगा, तो उसके लिए यहाँ पर ये कार्ड्स लगाए गए हैं। और अब हम आपको मंदिर की उस जगह पर ले आए हैं जिसका आपको इंतजार था कि मंदिर सामने से कैसा दिखता है। तो ये उस मंदिर का द्वार है और सामने अगर आप देखेंगे आपको दरवाजा जो दिख रहा है उसमें सोने का दरवाजा नजर आ रहा है। जैसे आपने अयोध्या में राम मंदिर में देखा है वैसे ही यहाँ सोने का दरवाजा है। और 2 मूर्तियां जो हैं वो अभी ढकी हुई दिख रही हैं क्योंकि अभी प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई है जो कि 14 तारीख को होनी है। और अगर आप इस हिस्से को देखेंगे, थोड़ा सा देखेंगे तो आपको ऊंट और मरुस्थल नजर आ रहा है। तो जिस हारमनी की हम बात करते हैं, अगर आप, मुझे नहीं लगता कि रेगिस्तान में मोर होता है, तो ये हिस्सा जो है वो आपको भारतीय संस्कृति को दिखा रहा है। इधर आपको ऊपर रेगिस्तान और ऊंट दिख रहा है। यहाँ आप देखिए, यहाँ आपको जो है ये आपको बीएपीएस संस्था से जुड़े हुए लोग और ये शेख भी नजर आ रहे हैं। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ये सारी चीजें जो है ना वो यहाँ बनाई नहीं गई हैं, ये सारी भारत में बनी और फिर यहाँ लाकर इनको एक एक चीज को व्यवस्थित किया गया है। तो ये अपने आप में बहुत ही शानदार दिखता है। तो पूरी मेहनत और सबसे बड़ा संदेश जो हारमनी का दिया गया है जिसकी हम बात कर रहे हैं। भाई आपका क्या नाम है? मेरा नाम आजाद मियाँ। आजाद मियाँ, आपने यहाँ क्या, अभी आप इलेक्ट्रिक का काम यहाँ पे आप कर रहे हैं? जी, हम इलेक्ट्रिकल का काम भी कर रहे हैं, हम सार्वजनिक भी कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे लोगों को कैसा लग रहा है ये मंदिर बना तो? माशाल्लाह जबरदस्त लग रहा है। माशाल्लाह जबरदस्त लग रहा है। And now we're going to be connecting to my colleague Rishabh, who joins us on the broadcast right now. Rishabh, very exciting times for ties between the two nations. It is the Prime Minister's 7th visit since 2015 and third in the last 8 months itself. Tell us more about what exactly is on the cards and tell us about what the Prime Minister is doing right now when it comes to the bilateral. Well, definitely, if we talk about India and UAE, the bilateral relations have been peaking in last 10 years, I can say. The Prime Minister's 7th visit already and third in last 8 months. Remember, he was on a one-day bilateral visit to UAE in July. Then there was a visit for COP28, and now again he is in Abu Dhabi where he'll be meeting the President of UAE, Vice President of UAE, who happens to be the King of Dubai as well. So the way India and UAE have been working together, it showcases that how UAE has become an all-weather friend for India in the Gulf region. Apart from that, if we talk about what's on agenda, a lot is on agenda: trade,
as well as energy and fuel is something that India and UAE would be discussing. Alhan Modi, which is going to begin in around 3 hours from now. It has already begun, but the Prime Minister would reach there in 3 hours from now. We will see one of the biggest diaspora event in the Gulf region that an Indian Prime Minister will be attending. Then the Bab's Temple inauguration tomorrow is another cultural connect that India and UAE is creating. Remember, Bab's Temple, the Swaminarayan Temple, happens to be the largest in the world. So that is something that is going to be very, very important. So definitely a power-packed visit for Prime Minister. Apart from that, Prime Minister would be the keynote speaker at the World Government Summit as well. And this is the second time where he has been invited to speak there. Last time he was speaking at World Government Summit in 2018. So definitely the connection that UAE and India has been developing is reaching another level with the Prime Minister's visit now to UAE. To power, it's been said that the ties with India took on a completely new level and scaled greater heights altogether. And beyond this, we've also seen the Prime Minister refer to the UAE President as a brother. Tell us more about the relationship that those two leaders share. When it comes to diplomacy, when it comes to country-to-country relationship, the relationship between the top leadership definitely matters. And here, when we talk about the UAE President and Indian Prime Minister, we have never seen both these leaders addressing each other only as His Excellency or Honorable Prime Minister. There has always been an addition to that, a prefix of brother or brotherly. That is something that showcases that how warm the relationship is. And if we're talking about both these leaders, the way both these leaders have worked for a mutual development of India and UAE, it showcases that how the leadership level friendship definitely defines the diplomacy between the two countries. All right, Rishabh, thank you so much for joining us and bringing us those details. We'll continue to return to you as we continue to cover the Prime Minister's visit to the UAE. Remember, in a short while from now, he's also going to be attending a mega Indian diaspora event titled Nahyan Modi, and that is essentially Hello Modi. Beyond this, we're going to be shifting focus